नमस्ते बच्चों, कैसे हो? वेलकम यू ऑल टू टुडेज ऑनलाइन क्लास. बिफोर स्टार्टिंग, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर कज हित, संपत्ति सची सुजान. Did you hear this doha before? Do you remember this one? Where did you come across this doha? Yeah, anyone tell? Yes, last year. Last year in our Hindi textbook it was there. This is the couplet, a doha from Rahim Das ji. So children, today also we are going to learn the doha from Rahim Das ji. So everyone take your book and listen carefully. You know that Rahim Das ji is an old Hindi poet. Last year I had told you in the introduction, and in the lesson also you will come across the introduction of Rahim Das ji, old Hindi poet, and his doha is always a moral doha. Okay, so everyone look into your book and listen carefully. So part 11 रहीम के दोहे. We are doing lesson 11 रहीम के दोहे. कवि परिचय. अकबर के दरबार में नवरत्नों में रहीम का प्रमुख स्थान था. इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था. उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था. So first we are doing the Kavi Parichaya. Kavi Parichaya means we are introduction of the poet. Rahim Das, you know already, last year we had learned about Rahim Das, and Doha also we learned. So अकबर के दरबार में नवरत्नों में रहीम का प्रमुख स्थान है. Rahim Das was one of the 9 diamonds, Navratna, in Akbar's court. He was the main man there. इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था. His name was अब्दुल रहीम खान खाना. उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ था. He was born in 1556 in Lahore. इनकी मृत्यु सन 1627 में हुई थी. इनके पिता बैरम खान सम्राट अकबर के संरक्षक थे. रहीम नीतिपरक दोहों के प्रसिद्ध कवि हैं. वे अपने समय में नहीं बल्कि आज भी एक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं. इनका मृत्यु सन 1627 में हुई थी. His death was in 1627, and his father was Bairam Khan. He was in the court of Akbar, and he was the soldier there. His bodyguard, Sanrakshak means bodyguard. He was the bodyguard in Akbar's during Akbar's rule. रहीम नीति परक दोहों के प्रसिद्ध कवि हैं. Rahim is a poet who is writing the moral couplets. नीति परक means moral. वे अपने समय में नहीं बल्कि आज भी लोकप्रिय माने जाते हैं. So not only in his time but now also Rahim Das is famous for his poems. Now his language. इनकी भाषा में अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग मिलता है. In his language he used अरबी, फारसी and उर्दू. इनके दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं.
रहीम सत्सई इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके दोहे, his couplets are very famous and his main work is Rahim Satsai, in which many couplets are there. दोनों रहीम एक से, जो लोग बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही. So after the introduction of the Kavi, we will come to the Doha. See, the Dohas you have to by heart it. Any two Doha you have to write the summary and the English meaning and Hindi meaning, both you have to write. Okay. So, दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही. So now we go on to the meaning of it. First the Hindi meaning, then I'll give the English one. कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं. जब तक यह बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती. लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है. This is the English Hindi meaning for the Doha. Now we will move on to the English one. In this Doha, Rahim Das ji says that cuckoo and crow both are same in color. We cannot distinguish between them. When spring comes, cuckoo starts singing and then only we can differentiate both of it. So you already know that crow and cuckoo both are in the same color. They have different voice, but we cannot differentiate it when we see in the first time. But with the sound only we can make it out. Okay. So we will see the Doha once again. दोनों रहीम एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही. ऋतु बसंत means the spring season. बोलत means the sound. काक पीक, काक means crow, पीक means cuckoo. Jan parat means we don't understand. So the Hindi one again we will see. कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं. जब तक यह बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती. लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज में दोनों का अंतर पता चल जाता है, अंतर स्पष्ट हो जाता है. Now move on to the English one. In this Doha, Rahim Das ji says that cuckoo and crow both are same in color. We cannot distinguish between them. When spring comes, cuckoo starts singing and then only we can differentiate both of it. So hope you understood this Doha. We will move on to the next Doha. रहीमन देख बेडन को लगू न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी. So here देख means to see. Ave means ana, to come. Talwari means the sword. लघु मीन्स छोटे, स्मॉल. रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए. वहां जहां छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार बेचारी क्या करेगी, क्या कर सकती है. बेडन मीन्स बड़ा. वंस अगेन, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए.
जहाँ छोटी वस्तु को सुई की काम आती है, वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है, तलवार की जरूरत नहीं है। नाउ इंग्लिश। In this doha, Rahim Das ji says that we should not throw away the small things, saying that the big one is good. Where a needle is needed, why we use a big sword? Once again, in the doha, Rahim Das ji says that we should not throw away the small things, saying the big one is good. Where a needle is needed, why should we use a big sword? Okay, the next one. टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार. सुजन means अपना जन या our beloved. Manaye means to console. Tote muktahar. Muktahar means the moti ka har or the pearl garland. Firi firi means bar bar, all again and again. Poye means to make. The Hindi meaning now. रहीम दास जी कहते हैं कि अपना प्रिय जन टूटे या रूठ जाने से उन्हें मना लेना चाहिए, जैसे मोतियों का हार टूटने पर बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार रूठे हुए जन को बार बार मना लेना चाहिए. वंस अगेन, रहीम दास जी कहते हैं कि अपना प्रिय जन टूटे या रूठ जाने से उन्हें मना लेना चाहिए, जैसे मोतियों का हार टूटने पर बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार रूठे जन को बार बार मना लेना चाहिए. In this doha, Rahim Das ji says that if our beloved is sad, then we should console them. We should make them proper again and again, like we remake the broken garland again and again once broken. Once again, in this doha, Rahim Das ji says that if our beloved is sad, then we should console them. We should make them proper again and again, like we remake them the broken garland again and again once it broken. So he says that when our dear ones, when our beloved ones are sad, and if we say some harsh words, they become sad, or they turn face against us, then we should console them. We should go and say loving words and bring them back towards us, like we are making the garland, that is the mala. Once it is broken, we will take a thread again and we will remake it again and again if it is broken. So same way we should do. Okay. Next doha. पावस देखी रहीम मन कोयल सादी मौन, अब दादुर बक्ता भये हमको पूछत कौन. Pavas means the rainy season. Koil means the cuckoo or the learned person. Dadur, Bhakta, frogs. Puchat means puchna, to ask. So the meaning now. रहीम दास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु को देखकर रहीम और कोयल दोनों ही मौन रह जाते हैं. रहीम दास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु को देखकर रहीम और कोयल दोनों ही मौन रह जाते हैं. देन नेक्स्ट लाइन. सिर्फ मेंढक बोलते हैं,
हमारी बात कोई नहीं पूछता। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब गुणवान को चुप रहना चाहिए और गुणहीन लोग बोलते हैं, उनकी आधिपत्य होता है। Let's say once again. रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु को देखकर रहीम और कोयल दोनों ही मौन रह जाते हैं और सिर्फ मेंढक बोलते हैं, हमारी बात कोई नहीं पूछता। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब गुणवान को चुप रहना चाहिए और गुणहीन लोगों को बोलना चाहिए, या गुणहीन लोग बोलते हैं, उनकी आधिपत्य होता है। Now the meaning in English. Rahim Das ji says that when rainy season comes, he and crow keep silence. Only frog croak. No one will listen or ask us sometimes. Rahim Das ji says that there are instances when fools only talk and learned men keep quiet. Here it means that many times we won't be having any voice. In some cases, we may be learned man or we may be knowledgeable than others, but in that cases we won't be having our voice, and that time only fools or those who don't know anything, their voice will be more and they will be powerful. Their voice will be power and not us. So it is said that Rahim Das ji is saying that when rainy season comes, he and crow keep silence, only frog croak. No one will listen or ask us sometimes. Rahim Das ji says that there are instances when fools only talk and learned men keep quiet. They keep silence so that there won't be any conflict. So these are our dohas. Hope you have understood it. Children, hope you have understood the doha. You have to learn both the meanings, Hindi and English. And it will be like Sandarbha Sahit Vyakhya. It will be there. So any two doha you have to learn. Any you like. Which one you like, you can do it. Okay. So for today, I sign off. We will meet in the next class. Until then, bye and have a nice day to you people.